Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So with the Nifty yesterday, we saw there was a good amount of recovery, and now Nifty has now closed about 19,500 level, which was the immediate resistance. So now looking at the chart pattern, I believe we are going to see the continuation of this momentum. 19,600, 19,800 is the pullback level which I expect on the Nifty index. And gradually, if this 19,800 is taken out, then definitely we are heading for 20,000 and on the higher levels. On the way down, anytime if 19,200, which is the immediate base, which was the lowest point for the last week also, if those levels are held, if those levels are broken, then there can be little bit of further correction, but then that correction is only to the tune of 19,000 or maybe or 18,800 levels. So I don't see a much downside as of now, for at least for the next 1 or 2 weeks. We are talking of a trading bounce. 19,600, 19,100, 19,800 is the levels which we are watching for. Coming to Bank Nifty was also positive by 142 points. The close was 44,578 levels. The stocks like IDFC First, PNB, Bank of Baroda, and SBF. It's were the few counters which I see strength in yesterday's session. So if I look at the chart pattern, I believe this Bank Nifty is still in the range of 43,500 and 45,000 on the higher side. As and when we see a breakout above 45,000, then again the Bank Nifty will turn positive and there will be short covering in the Bank Nifty, and the stock specific action can be seen in the Bank Nifty. So both the indices, we are having a positive bias for the week. We are looking for a trading bounce. Coming to derivatives outlook. So the Nifty futures have seen a long build up to the tune of 0.16%. The put call ratio has also gained from 1.3 to 1.37. The writing has been seen at 19,400 and 19,500 on the put side. So this will act as a support. On the call option, 19,600, 19,700. So this will act as a resistance. Bank Nifty, there was a short covering to the tune of 4.45% and decline in OI. The put call ratio was up by 1.13 to 1.16. The slight increase was there. The major writing was seen as the 44,000 and 44,300 put option. So that will be the support. Higher side 45,000 and 44,800 call side. So that will act as a resistance. So in yesterday's session, there were the railway on the sector specific railway, then cement and IT and PSU bank. So these were the four sectors where we saw a very good amount of buying. Railways, the stocks are already moved up. So I think in the near term, whenever we see some correction, when this the cooling of the recent rally will be done, and then we see the correct whenever there's a profit booking, I think that would be opportunity to again re-enter in the railway stocks. Basically on a sector rotation, I think this current September series, we will see a lot of action in the IT space. I think IT should be the one which should be kept on your watch list. PSU banks is also very strong positive. I think there will be turnaround in the PSU bank as well. So I think these are the four sectors which we need to keep a watch on. Lastly, on the FI data, so FI are still like in the index future, they've gone long by 2,300 contracts. They are net long by 5,600 contracts, and the long short ratio stands at 51%. So that's the technical view. I'll hand over to Devang sir for more research updates. Thank you. Thank you, Brijay sir. Good morning, all. Couple of news from my end. Firstly, on PVR Inox. So PVR Inox, in partnership with CGR Cinemas, has launched its first ICE theater in South India. So it's a 12-screen multiplex, and there is a different perspective in terms of vision as well as voice and as well as 4D experience. Apart from this, PVR has stated that it has earned 532 crores in August, which bodes well for the stock. And Jawan booking is also doing well. Apart and That's why we have a positive view on PVR Inox. In terms of cement, cement prices has increased in the east by 25 to 35 rupees per bag, and the hike has come after months of subdued prices. South has been seen hike of 10 to 15 per bag, and this is positive for cement players. In the sector, we like Ultratech, which offers maximum upside for us.
and the bull case valued at 16x. Target price of Ultratech is 9437, an upside of 11%. For Mahindra and Mahindra Finance, in August 2023, the company estimates the overall distribution at 4,400 crores, delivering 15% YOY growth. The YTD August 2023 disbursement at 20,950 crores has increased by 20%. Healthy disbursement trend in current period have led to business assets of 90,500 crores, which is an increase of 9.4%. And in over March 2023 and 27% over August 2022. Their collection efficiency has also increased to 96%, and the company continues to maintain comfortable liquidity chest. Hence, we think this is a positive news for Mahindra and Mahindra Finance. On the metal segment, during 2023, August 2023, steel prices in India has remained unchanged month on month and YOY at rupees 56,600, despite a 6% month on month and 9% YOY decrease in Chinese steel prices to 550 per ton. In July 2023, Indian steel production has increased by 3% month on month to 11.5 MT, while Chinese and global steel production has remained stagnant to 91 MT and 159 MT. From April to July, China has emerged as the second largest steel exporters to India, selling 0.6 million tons. Overall, Chinese steel exports to the world remained robust at 7.5 million, reflecting 12% YOY growth. In the non-ferrous metal sectors, all the segments like aluminum, copper, zinc prices have decreased by 4% each, 4 to 6%. And looking ahead, we anticipate that the operating profit growth for steel companies will remain subdued in FY24. There is also possibility of recessionary environment in developed countries in coming 1 year. While the Indian government has nullified export duties, we maintain our cautious outlook on the global steel demand and forecasting limited growth for potential in our assessment. So overall, we have a negative view on the metal segment. In terms of Hero MotoCorp, so the automaker will invest around 550 crores in Ether Energy Private Limited in its rights issue. The Splendor maker, which currently holds 33.1% stake in Ether, will see shareholding rise in the company. The transaction is expected to be completed before end of September, so this bodes well for Hero MotoCorp. In terms of Tata Power, the company's unit Tata Power Renewable Energy has signed a 26 megawatt solar power delivery agreement with Neosim Industries to be set at Jharkhand, Maharashtra, and generate 59 mega units of power per annum. So this is a positive news for Tata Power. That's it from my end. Over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. Continuing with further updates, starting with RVNL and MPCC JVS emerged as the lowest bidder for all civil engineering works in Vadodara division of Western Railway. The project cost is near about 174 odd crores and the contract to be executed in 2 years. The company share in JV started 74 to 26%. Second, coming on Mahindra and Mahindra is an advanced discussion with Volkswagen. Is intending to use the German automaker's central MEB components for its e-drive and unified cells. IEX said that its total electricity volume for the month of August at 8469 million units, up 21% from last year. And if you see on the YOY basis, that is 7.3%, that at 3810 million units, and the real-time market volume grew by 21% YOY to 2738 million units. The market clearing price jumped from 33% YOY to 6.89 per unit. Kubota Escort says that the company will raise sector prices from September 16 and increase in prices will vary across models and across various geographies. News regarding to the energy segment, that is startup on HPC and green energy, JSW Energy. They among the companies are proposed to build a pump storage projects totaling 39 gigawatt in the company. And this will going to attract an investment of 3.12 trillion, and several energy companies are planned to set up PSPs in India to adding to the country's installed PSP of 4.7 gigawatt. And this was NHPC was planning the PSP of totaling of 20,000 to 22,000 megawatts. PFC said that on Monday that has signed a pact of 1,229 crore term loan to Assam Petrochemical to implement a 500 tons per day methanol at Namapru and 200 tons per day formalin plant at Boitrame, Assam. The 500 TPD methanol plant includes 11 megawatt CPP, which was inaugurated by PM. The project, including 200 TPD formalin plant, is scheduled to commence operations on March 31, 2024.
Drug maker Cipla says that its unit has inked a pact with acquired South Africa-based Actor Pharma, Cipla South Africa wholly owned subsidiary, and this is done with the Actor Holdings PT. There's 100% of the issued ordinary shares of Actor Pharma to the drug maker Cipla. The development underpins the Cipla's also commitment and investment over the counter business and supports its journey to a healthcare player in Australia. South Africa. Bharti Airtel on Monday said that it will purchase 23,000 megawatt of renewable energy by March quarter of the fiscal from the data center from Nextra. And as a part of its commitment to reduce the carbon footprint, Airtel has also acquired stakes in renewable energy project established by Continuum Green Private Limited and Vibrant Energy Holding to power six Netra's edge data center facilities. SpiceJet has announced an allotment of 4.81 crore equity shares on preferential basis to its aircraft leases to clear its outstanding debt of 231 crore. This report was allotment of board of directors and company at its meeting passed several resolution, including a 2,500 crore fundraiser under preferential issue shares to leasers at an issue price of 48 rupees each. Bail on Monday said it is backed in order of from NHPC to its 2880 megawatt Dibang multi-purpose project in Arunachal Pradesh. The order of the electromechanical work project has been backed against the stiff competition and under international competition bidding, Bail said in a statement. It, however, did not share the order value and the scope, and the contract includes design, engineering, manufacturing, supply, erection, and commission of the ELM project. Dish TV for the Dish TV the Monday, the Bombay High Court has rejected an interim plea by the Dish TV India promoter entity World-Class Advisors Limited seeking to prevent Yes Bank and JC Flowers ARC from transferring and incoming Dish TV shares. World-Class has 0.05% stake in Dish TV had filed a plea before the court seeking ownership of 440 million shares of Dish TV. Last update from mine would be Indigo has placed another 10 additional aircraft A320 new post, which has been facing issues with B&W engines. So total 310 aircrafts are there, and this will be around 33 billion catalog prices with the France Airbus. So that's it from mine. I hand over to Shantanu for second order. तो या थैंक यू हितेंद्र एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो स्टार्ट करते हैं आज के हिंदी अपडेट्स के साथ. फर्स्ट जो अपडेट है वो है पीवीआर आइनॉक्स पे, जहाँ पे पीवीआर पार्टनरशिप करने के प्लान्स में है सीजीआर सिनेमा से, जहाँ पे वो अपना फर्स्ट आईसी थिएटर फॉर्मेट जो है लॉन्च करने वाले साउथ इंडिया में. इसके अलावा पीवीआर ने जो है ओवरऑल 532 crore rupees earn किए in the month of August because of blockbuster movies like Gadar 2 and Oh My God 2. So overall एक काफी पॉजिटिव अपडेट होगा पीवीआर के स्टॉक के लिए आने वाले कुछ दिनों में. सीमेंट सेक्टर के ऊपर एक पॉजिटिव अपडेट है, जहाँ पे सीमेंट की प्राइसेस जो है वो ईस्ट साइड में काफी बढ़ी है, ₹25 to 35 पर बैग के हिसाब से. एंड ये जो हाइक है ये बहुत महीनों के बाद जो है देखने मिला है. साउथ रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 10 से 15 रुपए पर बैग के हिसाब से हाइक देखने मिला है सीमेंट प्राइसेस में. सो अगेन एक पॉजिटिव अपडेट होगा सारे सीमेंट कंपनीज के लिए. इस सेक्टर की अगर बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो मैक्सिमम अपसाइड इसके टाइम में दिखा रहा है स्टॉक प्राइस के बेसिस पे, जहाँ पे एक 16x बेसिस पे वैल्यूएशन दिख रहा है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹9,437. सो यहाँ से करंटली 11% का अपसाइड हम अल्ट्राटेक सीमेंट के प्राइस में देख सकते हैं. महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव अपडेट है, जहाँ पे अगस्त 2023 की अगर बात करें तो कंपनी जो है उन्होंने ओवरऑल ₹4,400 crores के एस्टिमेट जो डिसबर्समेंट एस्टिमेट किए हैं, डिलीवरिंग 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. ईयर टू डेट अगस्त 2023 डिसबर्समेंट की अगर बात करें तो वो दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली ₹20,950 crores पे, जहाँ पे एक 22% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ रजिस्टर किया गया है. इसके अलावा जो डिसबर्समेंट ट्रेंड है करंट पीरियड में वो मोस्टली जो है लीड किया था बिजनेस एसेट्स ने, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ₹90,500 crores की ग्रोथ देखने मिली थी, जो है अराउंड 9.4% ओवर मार्च 2023 एंड अप्रोक्सीमेटली 27% की ग्रोथ देखने मिली थी ओवर अगस्त 2023. इसके अलावा अगर मेटल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट
दिख रहा है, जहाँ पे अगर अगस्त 2023 की बात करें तो इंडिया में जो स्टील प्राइसेस है उसमें कोई मेजर चेंज नहीं दिखा है मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। करंटली जो है अराउंड ₹56,600 पर टन चल रहा है। तो डिस्पाइट ऑफ अ 6% मंथ ऑन मंथ एंड 9% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज इन चाइनीज स्टील प्राइसेस, जो $550 पर टन है। तो यहाँ पे एज कंपैरिजन टू चाइना, इंडिया में कोई मेजर चेंज नहीं दिखा है स्टील के प्राइसेस में। सो डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट होगा मेटल सेगमेंट के लिए। जुलाई 2023 की अगर बात करें तो इंडियन स्टील प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ था 3% से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे टू 11.5 मिलियन टन। जबकि चाइनीज एंड ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन जो है वहां पे एक स्टैग्नेंसी दिखी थी एट 91 मिलियन टन एंड 159 मिलियन टन रेस्पेक्टिवली। अप्रैल टू जुलाई पीरियड की अगर बात करें तो चाइना जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टील एक्सपोर्टर बना था इंडिया के बाद, सेलिंग 0.6 मिलियन टन, which is higher by 62% year on year। स्टॉक रिलेटेड कुछ अपडेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बीएचईएल की बात करें तो बीएचईएल भेल जो है इन्होंने मंडे को एक ऑर्डर बैक किया है फ्रॉम एनएचपीसी। ये जो ऑर्डर है ये है 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, जो अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव अपडेट होगा भेल के लिए। इसके अलावा अगर भारती एयरटेल की बात करें तो भारती एयरटेल ने मंडे को कहा है कि वो 23,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी परचेस करेगा मार्च क्वार्टर में इस पर्टिकुलर ईयर के। सो एज अ पार्ट ऑफ द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इट्स कार्बन फुटप्रिंट, सो भारती एयरटेल जो है ये स्टेक्स एक्वायर करेगा इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कंपनीज जो एस्टेब्लिश की गई है, क्वांटिमम ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड वाइब्रेंट एनर्जी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात करें तो कंपनी जो है ये प्लान कर रही है टू इन्वेस्ट ₹550 crores मोर इन एथर एनर्जी वाया इट्स राइट्स इशू। ये जो कंपनी है जो करंटली 33.1% स्टेक होल्ड करती है एथर में, वो अपना शेयर होल्डिंग बढ़ते हुए देखेगी आगे जाके। ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है टू बी कंप्लीटेड बिफोर द एंड ऑफ सितंबर मंथ। एस्कॉर्ट्स कुबुता की अगर बात करें तो कंपनी जो है इन्होंने अपने ट्रैक्टर प्राइसेस रेज करने का प्लान किया है, जो इफेक्टिव होंगे फ्रॉम सितंबर 16। सो ये जो प्राइस इंक्रीज होगा ये वेरी होगा अक्रॉस डिफरेंट मॉडल्स एंड जोग्राफीज। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर बात करें तो कंपनी जो है ये एक एडवांस डिस्कशन में है वोक्सवैगन के साथ, जहाँ पे उनका इंटेंशन है टू यूज जर्मन ऑटोमेकर्स सेंट्रल एमईबी कंपोनेंट्स सच एज ई ड्राइव एंड यूनिफाइड सेल्स। फाइनल अपडेट जो है वो है टाटा पावर के ऊपर, जहाँ पे कंपनी का जो यूनिट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने एक 26 मेगावाट सोलर पावर डिलीवरी एग्रीमेंट साइन किया है नियोसिम इंडस्ट्री के साथ। और ये जो ओवरऑल एग्रीमेंट है ये जमखेड़ महाराष्ट्र में हो रहा है। एंड इस प्रोजेक्ट के थ्रू ओवरऑल 59 मेगा यूनिट्स ऑफ पावर पर एनम जनरेट करने का कंपनी का विजन है। मार्केट रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स देखें तो कल के सेशन में हमने मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट देखा, बट जो पॉजिटिविटी हमने फ्राइडे को देखी थी वो कहीं ना कहीं सस्टेन होती दिखी है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने 19,500 के ऊपर कल के सेशन में क्लोजिंग दिया था, जो एक पॉजिटिव बात थी इंडेक्स के लिए। करंटली अगर बात करें तो 19,200 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए, जबकि करंट लेवल से एक बाउंस अप टू 19,600 टू 19,800 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो है अभी भी अपने वाइड रेंज में ट्रेड कर रहा है फ्रॉम 43,500 एक्टिंग एज ए सपोर्ट टू 45,000 ऑन द हायर साइड, जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर बैंक निफ्टी 45,000 को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो हम एक फ्रेश अपवर्ड मूवमेंट वहां से भी देखने मिल सकती है। कुछ स्टॉक्स की अगर बात करें जहां पे आज नजर रखी जा सकती है ऑन द पॉजिटिव साइड, तो वो है दालमिया भारत, सेल, आईडीएफसी फर्स्ट एंड फर्स्ट बैंक एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स।
FIIs और DIIs डेटा की अगर बात करें तो कल के सेशन में FIIs ने 3,367.67 करोड़ की सेलिंग की थी, जबकि DIIs ने ₹2,563.48 करोड़ की बाइंग कल के सेशन में की थी। फ्यूचर्स डेटा पे अगर नजर डाले तो कुछ स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप कल के सेशन में देखने मिला था वो है नेशनल एल्यूमिनियम, बलरामपुर चीनी एंड कोफोर्ज, जबकि कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने मिला है वो है JK सीमेंट, एस्कॉर्ट्स एंड कॉनकॉर। So this was all from our end. Thank you for attending the morning con call. Have a good day.